बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Dear students, I hope you will be fine. I am here with another lecture of Signal and System series. In this lecture, we are going to discuss the properties of systems, both continuous domain systems and discrete domain systems. So we will talk about a number of different properties which the system may possess, and according to those properties, some system will have those properties, some system will not have those properties. So we will talk about certain examples which system has any specific property or not. So let's start today's lecture. This is the outline of what we are going to discuss in this short lecture. We will talk about the first property, system property about which we will talk about is called stability. Stability is an important property. It tells us that whether or not a system is stable. Unstable systems do exist and they can cause some problems. So we should know that when a system is stable and when it is not stable, because we are going to design such systems. So as a designer, you should never design a system which is unstable, because unstable operation simply means that under some conditions your output will go to infinity. So we will define what is stability and what are the type of systems which may be stable and which may not be stable. The another property is there are some systems which have a memory associated with them. Memory basically means that certain values are already stored or present in that system, and if you are not applying the input and if your system has memory, so your system can still generate an output without the application of input if your system has memory. The next property which we will talk about is called causality. So causality is an important system property, and many a times we require systems which should be causal. So we will define what is causality and what systems are supposed to be causal and what are the type of systems which are non-causal. Then the next property about which we will talk about is called invertibility. Invertibility in simple words mean that if one system, for example you have a system, आप उसको एक input दे रहे हैं x of t या x of n, और वो system उस input से एक output generate कर रहा है y of t या y of n, तो अगर वो invertible system है जिसने ये आउटपुट जनरेट की है, तो फिर इसका एक इन्वर्स सिस्टम भी एग्जिस्ट करता होगा, और वो इन्वर्स सिस्टम अगर आप ओरिजिनल सिस्टम के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें तो वो बेसिकली आपको दोबारा से इनपुट उसकी आउटपुट पे मिल जाएगी. यानी पहले सिस्टम ने इनपुट को x ऑफ t को एक y ऑफ t में कन्वर्ट किया. अब अगर उस सिस्टम का जिसने ये किया है इन्वर्टिबल सिस्टम एग्जिस्ट, इन्वर्स सिस्टम एग्जिस्ट करता है, तो वो अगर आप इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें तो वो इस y ऑफ t से दोबारा आपको x ऑफ t जनरेट करके दे देगा. एंड we have a number of applications where we require that system must be invertible, क्योंकि अगर आपके पास इन्वर्टिबल सिस्टम ना हो तो फिर जो उसमें effects प्रोड्यूस हो चुके हैं, you will not be able to nullify those effects. An example could be
कि जब आप एक सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो इसके अंदर जो है वो जब वो फार एंड पे वो सिग्नल रिसीव होता है तो उसके अंदर जो है वो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल रिसीव नहीं होगा। आपका जो चैनल है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, इट मे हैव एडेड समथिंग। सो इफ़ वी मॉडल द चैनल एज अ सिस्टम, तो फिर इसका इन्वर्स सिस्टम अगर हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो वो इस चैनल के इफ़ेक्ट्स को नलिफाई कर देगा। देन लास्ट थ्री प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट these three properties, homogeneity, additivity and time invariance, सो इनके बारे में हम जो है वो आज के लेक्चर में भी बात करेंगे और इनकी कुछ एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा जितना भी कोर्स हमारे पास होगा उसके अंदर जो कुछ हम डिस्कस करेंगे वो ऐसे सिस्टम्स के बारे में होगा जिनके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये जो होमोजेनिटी और एडिटिविटी की प्रॉपर्टी हैं, इनको कंबाइन करके हम इसका नाम हम दे सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर सिस्टम, अ सिस्टम विच हैज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ होमोजेनिटी and it has property of additivity. Such a system is called a linear system. और टाइम इनवेरियंस जो है, तो अगर किसी सिस्टम में ये तीन प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हों तो देन दैट सिस्टम इज कॉल्ड एन LTI सिस्टम, लीनियर एंड टाइम इनवेरियंट सिस्टम। सो इसके बाद हमारे कोर्स में जितनी भी डिस्कशन होगी सिस्टम्स के बारे में, इससे नेक्स्ट जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनके बारे में हम ये अज्यूम करेंगे कि उनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी मौजूद है, यानी वो सिस्टम लीनियर भी हैं और वो सिस्टम टाइम इनवेरिएंट भी हैं। सो इस वजह से इन दो प्रॉपर्टीज़, इन तीन लास्ट वाली तीन प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज तो जस्ट इनका इंट्रोडक्शन करेंगे, लेकिन इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स भी करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम जो हैं वो लीनियर होते हैं, कौन से सिस्टम जो हैं वो लीनियर नहीं होते, कौन से सिस्टम जो हैं वो टाइम इनवेरिएंट होते हैं, क्योंकि हमने एक क्लास ऑफ सिस्टम्स को डिस्कस करना है इस कोर्स में जो कि LTI सिस्टम कहलाते हैं, लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट। ओके, सो फर्स्ट लेट्स डिफाइन what is stability. So the definition of stability is a system is called stable system, या इसको bistable भी कहते हैं, bounded input bounded output, if it satisfies this condition. If the output of system remains less than infinity whenever input is less than infinity. So जब तक आपकी input infinite ना हो, आउटपुट को इन्फिनिट नहीं होना चाहिए। सो फॉर फिनाइट इनपुट योर आउटपुट शुड नेवर गो टू infinity. So such a system which has this property that if you are applying a finite input x of t, its output does not go to infinity, then such a system is called bistable system, bounded input bounded output stable. Bounded input means basically that the magnitude of this signal xt, which is input, this remains less than some value mx, and mx in turns is less than infinity. So for this output should remain less than some my could be different than mx, but it must be less than infinity. So a system which has this property, whose output remains less than infinity as long as the input remains less than infinity, the magnitude of input remains less than infinity, such a system is called a bistable system. Okay, so this is an example of an unstable system, real world example. This is a bridge in United States of America that was opened for traffic on July 1, 1940, and it collapsed just after a few months, 2-3 months, and basically the bridge collapsed due to this unstable system. This bridge, you can assume this bridge as a system, so there was instability in this bridge.
So due to that inherent instability, it could not sustain the heavy winds which it should have sustained. So this is a famous example of unstable system, and you can find the example of this bridge in many signal and system books and even in physics books. So basically the message is, the bottom line is, you should never ever design an unstable system. Most of the times जो हम सिस्टम फॉर एग्जांपल फिल्टर डिज़ाइनिंग कोर्स की अगर हम बात करें, वी आर गोइंग टू डिज़ाइन फिल्टर्स या और ऐसे सिस्टम्स जो हैं वो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं. तो our aim is, our objective is that those systems must remain stable, because instability is a phenomenon which will ruin the very design of your system. Okay, so let us take an example of an unstable system. Let's suppose the input-output relationship of a system, discrete time system, is defined like this. The output y of n is related to input by this r raised to power n xn. So let's suppose now that xn always remain less than some mx, and mx in turn is less than infinity. So it means input is bounded. That condition is satisfied, that input is bounded, because x of n is always less than infinity for all values of n. So x of n signal, input signal, is bounded. So now according to this relationship, the magnitude of output will be equals to magnitude of this thing, r raised to power n and xn. So we can write it absolute value of Rn and absolute value of Xn. So absolute value of Xn, we know maximum it could be equals to mx. So y of n is r raised to power n m of mx. Now we know that this quantity mx is less than infinity. So this yn output, can it be when it will be less than infinity or when it will be greater than infinity? So now it depends upon the value of this r. If we chose r as less than 1, y of n will always remain less than infinity and the system will be stable. But if we chose r greater than 1, then with the passage of time, as n increases, this r raised to power n starts to increase. और अगर n is equals to infinity हो जाए तो ये something 1.1 या 1.2 या 2 raised to power infinity, that is equals to infinity. So y of n will become equals to infinity if r, the value of r, is greater than 1. So for those values of r, when r is greater than 1, this system will become unstable. However, the same system will remain stable as long as the value of r is less than 1, because जब इसकी वैल्यू 1 से लेस होगी, फॉर एग्जांपल इफ r is 0.9 या 0.8 या 0.7, तो दिस बेसिकली बिकम्स अ ज्योमेट्रिक सीरीज, और उस ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है वो कुछ यूँ होता है कि 1 माइनस r raised to power n divided by 1 माइनस r. सो ये आपके पास बेसिकली जब n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो इस ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होगा दैट विल सिंपली बी इक्वल्स टू 1/1 माइनस r, एंड 1/1 माइनस r विल नेवर गो टू इन्फिनिटी. अगर आप फॉर एग्जांपल r की वैल्यू जो है वो 0.8 है या 0.9 है या जो भी है, तो फॉर एग्जांपल अगर 0.9 है तो 1/1 माइनस 0.9, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 10 और समथिंग लाइक दैट. But this will only happen when r is less than 1. When r is greater than 1, this geometric series does not converge and its sum will be equals to infinity. So when sum will be equals to infinity, it means yn becomes infinity and this system becomes unstable. Okay, so now let's talk about the second property of systems. The second property is called memory. So as I told you in the introductory slides that there are some systems which
possess memory. And the definition is a system is said to possess memory if its output depends upon past or future values of input or output. So if the output of a system depends upon the past values of input or the future values of input, then such a system will be called a system which has memory. For example, if I define a system y of n, and that y of n is equals to x of say n minus 1, for example it is equals to 2 times x of n minus 1. So now this system is called a system which has memory, because at this present time, for example अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में n की वैल्यू जो है वो अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो y of 0 will be equals to 2 x of minus 1. x of minus 1 का मतलब है वो इनपुट जो इससे एक इंस्टेंट पहले आई थी, ये अभी वाली इनपुट नहीं है। अभी वाली इनपुट तो x of 0 वाली है, क्योंकि आप n is equals to 0 के लिए मालूम करना चाह रहे हैं। तो ये प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। अब प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड करके आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, तो इसका मतलब है वो प्रीवियस इनपुट जो इससे एक इंस्टेंट पहले आई थी वो आपने इस सिस्टम में कहीं स्टोर की हुई है और नेक्स्ट इंस्टेंट पे ये उसको आउटपुट पे लेके आ रहा है। सो स्टोर करने का मतलब ये है कि दिस सिस्टम हैज़ मेमोरी। कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें मेमोरी नहीं होगी वो सिंपली उसकी इक्वेशन आपके पास y ऑफ n विल बी इक्वल्स टू सिंपली x ऑफ n। कोई इसमें x ऑफ n माइनस 1 या x ऑफ n प्लस 1 की टर्म जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि x ऑफ n माइनस 1 प्रीवियस इनपुट्स हैं और x ऑफ n प्लस 1 जो हैं वो फ्यूचर इनपुट्स हैं। सो फ्यूचर या प्रीवियस इनपुट जिस सिस्टम में भी होंगी वो सिस्टम कहलाएगा that such a system has memory. But this system y of n is x of n या 2 times x of n या 3 times x of n, this is called a memoryless system, क्योंकि इसकी जो output है that is only dependent upon the current input, कोई previous value इसमें मौजूद नहीं है, कोई future value भी मौजूद नहीं है। And a real world example is the resistor is an example of a memoryless system. The current flowing through a resistor is given like this: v of t divided by r1 over rv of t. So we are taking the output at time t I of t is only dependent upon input at time t. V of t is the voltage at time t and I of t is the current at time t. So current at time t is dependent upon voltage at time t. But if we take the example of an inductor, so current flowing through an inductor is equals to 1 over L minus infinity to t V of t. So current flowing through an inductor is an integral of all is basically summation of all the previous values of voltages. So it not only depends upon current voltage V of t, it also depends upon the previous voltage V of t minus 1, V of t minus 2, V of t minus 3 and so on so forth. So करंट टाइम से लेके करंट टाइम फॉर एग्जांपल अगर आप t इज इक्वल्स टू 0 पे मालूम करना चाह रहे हैं तो इंडक्टर के अंदर जो करंट होगा वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक जितनी भी वैल्यूज़ वोल्टेज की आई हैं उनको आप इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसको L से डिवाइड करेंगे. सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द प्रीवियस वैल्यूज़ of voltage V. So that's why such a system is called a memory system. So inductor is an example of a system which has memory, whereas resistor is example of a system which is memoryless or which does not have memory. Okay, so now let's talk about another property of the system which is called causality. सो मेमोरीलेस, इस प्रीवियस स्लाइड में जो हमने मेमोरीलेस और मेमोरी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसमें यह होता है कि कोई भी सिस्टम आपके पास अगर है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ करंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है तो वो मेमोरीलेस कहलाता है, और अगर वो
प्रीवियस पे भी डिपेंड कर रहा है या फ्यूचर पे भी डिपेंड कर रहा है, तो फिर उसको हम कहेंगे कि दैट सिस्टम हैज़ अ मेमोरी। काजलिटी में ये है कि सिस्टम इज कॉल्ड काजल इफ इट डिपेंड्स अपॉन present and past inputs, present and or past inputs. There could be present input or past few values of past inputs and present input and few values of past input are only past inputs, still it will be causal, but there should be no future input in that system, इनपुट और आउटपुट इन दैट सिस्टम। उसकी जो इक्वेशन आप सिस्टम की लिखेंगे उसमें कोई फ्यूचर वैल्यू मौजूद नहीं होनी चाहिए, एंड दैट इज गिवन इन दिस एग्जांपल। y of n in first case is defined as 1/3 x of n. X of n is current input, x of n minus 1. X of n minus 1 is the input which occurred one instant earlier. X of n minus 2 is the input which occurred 2 instances earlier. So this is a causal system because it depends upon the present input. This is present input, this is previous input, this is also previous input, but there is no future input in this system, so this system is causal. However, if you talk about this system, y of n is 1/3 x of n plus 1. We are at time instance n and it depends upon an input which will come next, जो अभी तक वो input नहीं आई, इससे next instant पे आएगी. So such a system is called नॉन काजल सिस्टम। इसमें चाहे एक भी इनपुट हो, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक जो है ये इसको नॉन काजल बना रही है। एक्स ऑफ एन इसमें हो सकता है, काजल के अंदर ये एक्स ऑफ एन हो सकता है, एक्स ऑफ एन माइनस 1 हो सकता है, ये इसके अंदर मौजूद हो सकता है, लेकिन फ्यूचर की कोई एक भी इनपुट नहीं होनी चाहिए। अगर फ्यूचर में कोई एक भी फ्यूचर इनपुट आ गई इस इक्वेशन में, तो देन दिस सिस्टम विल बिकम नॉन काजल। फ्यूचर का क्या मतलब है, आप n की कोई भी एक फिक्स वैल्यू पुट करके इसमें देख सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर हम n को 0 पुट करें तो y ऑफ 0 इज 1/3 x ऑफ 1। सो x ऑफ 1 इज द फ्यूचर इनपुट, जो अभी आप टाइम n इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट देख रहे हैं। x ऑफ 1 वो इनपुट है जो उस वक्त आएगी जब आप टाइम n इज इक्वल टू 1 पे जाएंगे। सो दैट इज फ्यूचर, सो दैट्स व्हाई दिस मेक्स इट नॉन काजल। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की कॉज़ैलिटी की और मेमोरीलेस की, ये ज़ीरो स्टेट रिस्पांस की फॉर्म में भी डिस्क्राइब की जा सकती हैं। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने ज़ीरो स्टेट रिस्पांस और ज़ीरो इनपुट रिस्पांस ऑफ सिस्टम्स देखा था। सो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉज़ैलिटी एंड मेमोरीलेस or memory property, these can also be described in terms of zero state response. So अगर हम zero state response की टर्म में इनको डिफाइन करें तो ये डेफिनेशन ये है, any system for which the zero state response occurs only during or after the time in which the excitation is applied is called a causal system. सो ज़ीरो स्टेट रिस्पांस क्या होता है, लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि हम वी विल अज्यूम कि जो अगर आपके पास उस सिस्टम में जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आपके पास एक कैपेसिटर था। सो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि कैपेसिटर इज़ इनिशियली अनचार्ज्ड, इट इज़ नॉट चार्ज्ड, तो और फिर हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से आपके पास आउटपुट जो है वोल्टेज विच डेवलप्स अक्रॉस द कैपेसिटर, वो हमने डिस्कस की थी। सो दैट इज कॉल्ड जीरो स्टेट रिस्पांस, यानी इनिशियली जो स्टेट ऑफ योर सिस्टम थी दैट वाज जीरो, आपने इनपुट अप्लाई की तो आपके सिस्टम की स्टेट चेंज होना शुरू हुई, यानी वो कैपेसिटर की जो चार्ज होना है दैट इज द चेंज ऑफ स्टेट। सो जीरो स्टेट रिस्पांस अगर अकर करता है इफ इट अकर्स only during or after the time in which input is applied, excitation mean input, तो then such a system is called causal system. लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है कि its zero state response at some arbitrary time depends upon anything other than the excitation at that same time, तो then that would be called a dynamic system or a system which has memory.
सो काजल के लिए, काजल होने के लिए ज़रूरी है कि ज़ीरो स्टेट रिस्पांस सिस्टम का इनपुट की एप्लीकेशन के बाद होना चाहिए. ड्यूरिंग और आफ्टर द application of input, if your system is generating zero state response, then it is called a causal system. लेकिन अगर इनपुट की एप्लीकेशन से पहले ही आपका कैपेसिटर किसी तरीके से चार्ज होना शुरू हो जाता है, तो then it would be said that that system is not causal, or it is called a dynamic system, and it is said to have some memory. क्योंकि वो हमने तो इनपुट अप्लाई ही नहीं की, लेकिन उससे पहले ही अगर उस सिस्टम की स्टेट के अंदर कोई चेंज आ रही है, तो इट मीन्स दैट देयर इज सम मेमोरी जो उसकी स्टेट को चेंज कर रही है. सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड अ डायनेमिक सिस्टम, नॉन causal also. Okay, so now let's talk about the next system property, which is called invertibility. So invertibility is a property which some systems will have and some systems will not have. So its definition is a system is said to be invertible if unique excitations produce unique zero state responses. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप इनपुट को चेंज कर दें, दो डिफरेंट इनपुट के लिए सिस्टम की आउटपुट सेम नहीं होनी चाहिए. अगर दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए आपके पास सिस्टम की आउटपुट सेम है, तो देन दैट सिस्टम विल नॉट बी इन्वर्टेबल. जैसे ही इनपुट चेंज हो जाती है तो आउटपुट भी चेंज हो जानी चाहिए सिस्टम की. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी एन एग्जांपल, और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट इनपुट्स से सेम आउटपुट कैसे हो सकती है. लेकिन अगर आपका सिस्टम ऐसा है कि डिफरेंट इनपुट आप दे रहे हैं लेकिन आउटपुट सेम हो आ रही है, तो ऐसा सिस्टम इन्वर्टेबल नहीं होगा. ऐसा सिस्टम सिर्फ इन्वर्टेबल होता है जिसमें यूनिक इनपुट्स यूनिक आउटपुट जनरेट करें. यानी जब इनपुट आप चेंज हो जाए तो आउटपुट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जानी चाहिए. सो देयर शुड बी अ वन टू वन correspondence between input and output. One to one correspondence, I hope you will understand कि different inputs के लिए, अगर for example if you have 10 different inputs which are different from each other, so those 10 different inputs should produce 10 different outputs. So there is a one to one correspondence between inputs and outputs. But if you have 10 different inputs and at the output you only get 5 different outputs, then there is not a one to one correspondence between input and output, and such a system will not be invertible. So invertible सिर्फ वही सिस्टम होगा जिसकी इनपुट और आउटपुट के दरमियान वन टू वन correspondence होगी. यूनिक इनपुट्स यूनिक आउटपुट जनरेट करेंगी. अगर आपकी इनपुट यूनिक हैं लेकिन वो आउटपुट सेम जनरेट कर रही हैं, तो देन सच अ सिस्टम इज नॉट एन इन्वर्टिबल. सो अब इस आउटपुट के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो आउटपुट है वो 9 है, तो 9 के लिए 9 आउटपुट आपके पास कैसे आई होगी? अगर मैं आपको सिर्फ ये आउटपुट दे दूं कि आउटपुट इज 9 एंड टेल मी व्हाट वुड बी द इनपुट, नाउ यू हैव टू आंसर्स. एक आंसर ये है कि ये +3 के केस में भी आउटपुट 9 आ सकती है, और दूसरा आंसर ये है कि -3 के केस में भी ये आउटपुट 9 आ सकती है. सो इसका मतलब है ये हुआ कि इस इंफॉर्मेशन से अगर सिर्फ आउटपुट गिवन हो विच इज़ 9, यू कांट टेल कि ये +3 इनपुट थी तब आउटपुट ये आई है या -3 इनपुट थी तब ये आउटपुट आई है, क्योंकि दोनों केसेस में जो है वो आपके पास आंसर सेम आ रहा है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिक इनपुट्स, ये +3 इज़ a unique input, -3 is different from +3, so these two inputs are unique from each other, but you are getting same output. So unique inputs are not producing unique outputs, which was a requirements for a system to be invertible. So इस वजह से ये सिस्टम जो है ये नॉन इन्वर्टेबल है, क्योंकि ये यूनिक इनपुट्स के लिए यूनिक आउटपुट्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड होमोजेनिटी, एंड इन अ होमोजेनियस सिस्टम if we multiply the excitation by any constant,
then the output, if output or zero state response is also multiplied by the same constant, then the system is called homogeneous. So I was having an input x of t, and my system produced output y of t for this particular input x of t. Now if I multiply this x of t by k, so my input will become k times x of t. If my output is also multiplied with the same constant k, then my system will be homogeneous. Otherwise it will not be homogeneous. So in the next lecture जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो वहाँ पे हम कई ऐसे सिस्टम्स देखेंगे कि जब आप इनपुट को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट उस सेम k से मल्टीप्लाई नहीं होगी, बल्कि किसी और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो ऐसा सिस्टम फिर होमोजीनियस नहीं होगा. तो होमोजीनियस होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो x अगर k से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मैं इनपुट को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करूं और वो कांस्टेंट कम्प्लेक्स कांस्टेंट भी हो सकता है, रियल कांस्टेंट भी हो सकता है, तो मेरी आउटपुट भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए. सो इफ माय सिस्टम हैज़ दिस प्रॉपर्टी then it will be called homogeneous, otherwise it will not be called homogeneous. सो ये एक मेथड गिवन है कि होमोजीनियस किसी सिस्टम के बारे में फाइंड करना कि वेदर इट इज़ होमोजीनियस और नॉट. तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, तो इन स्टेप्स की थोड़ा सा इन स्टेप्स को समराइज करते हैं. इन स्टेप्स की बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो इसमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम कोई इनपुट सिग्नल g ऑफ t जो है वो देते हैं एज अवर एक्साइटेशन, और इसका हम रिस्पांस फाइंड करते हैं कि y1 ऑफ t जो है वो क्या आ रहा है. फिर हम अपने सिग्नल g ऑफ t को k से मल्टीप्लाई करते हैं और ये हम सेकंड इनपुट ले लेते हैं. सो वी अप्लाई टू डिफरेंट इनपुट्स. फर्स्ट इनपुट x1 ऑफ t वाज इक्वल्स टू g ऑफ t, सेकंड इनपुट x2 ऑफ t इज इक्वल्स टू k टाइम्स g ऑफ t. सो हम ये देखते हैं कि इस जब हमारे पास इनपुट ये होती है तो जो हमारे पास इसके लिए आउटपुट आएगी क्या वो भी k टाइम y1 ऑफ t है या नहीं है. अगर तो वो k टाइम y1 ऑफ t है तो इसका मतलब है आवर सिस्टम इज होमोजीनियस, अदरवाइज दैट सिस्टम विल नॉट बी होमोजीनियस. सो होमोजीनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जब आप इनपुट को किसी कम्प्लेक्स या रियल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो आउटपुट भी उसी कम्प्लेक्स या रियल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए. Now the next property is called time invariance property. So this is also important, time invariance property. और time invariance में ये होता है कि definition ये है कि I have an input x of t and my system produces an output y of t for this particular input x of t. So x of t जब input थी तो my system is producing y of t as output for this particular input. Now if I delay my input by an amount t naught, so my input will now become x of t minus t naught. So this is a delayed signal. Remember that x of u of t जो है वो स्टार्ट होता है 0 से एंड इट गोज अप टिल इंफिनिटी. u of t minus 3 मीन्स कि वो t is equals to 3 से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो अप टिल प्लस इंफिनिटी. सो that is a delayed signal u of t minus 3. So x of t minus t naught is my delayed signal. इस xt सिग्नल को मैंने डिले कर दिया by an amount t naught. तो क्या मेरी आउटपुट जो है वो भी सेम अमाउंट से डिले होगी या डिले नहीं होगी. अगर तो मेरी आउटपुट भी सेम अमाउंट से डिले हो जाए y of t minus t naught, तो फिर मेरा ये सिस्टम जो है this will be called a time invariant system. लेकिन अगर इसमें जो अमाउंट ऑफ डिले है आउटपुट में वो डिफरेंट हो, टी नाट के बजाय कुछ और हो, 2t naught हो, 3t naught हो या एनी अदर मल्टीपल ऑफ t naught हो या कुछ और हो, तो उस केस में फिर मेरा जो सिस्टम होगा वो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम नहीं होगा. ठीक है. सो ये टाइम इनवेरिएंस की प्रॉपर्टी है और इसके बारे में भी जैसा कि मैंने कहा कि ये चूँकि हमने ऐसे सिस्टम्स डिस्कस करने हैं जो कि लीनियर भी हैं और टाइम इनवेरिएंट भी हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी
ऐसे सिस्टम्स की एग्जांपल्स देखेंगे और ये स्टेप्स फॉर्म में हम सॉल्व करके देखेंगे कि कौन से सिस्टम लीनियर होते हैं, कौन से सिस्टम लीनियर नहीं होते। सिमिलरली कौन से सिस्टम टाइम इनवेरिएंट होते हैं और कौन से सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं होते। नाउ अनदर प्रॉपर्टी which is called additivity, and this is also very simple to explain. So let's suppose I have a system और इसको मैं input देता हूँ x1t and this system produces y1t as output. फिर इसी सिस्टम को लेट्स सपोज मैं इनपुट चेंज कर देता हूँ, अब x2t को डिफरेंट इनपुट दे रहा हूँ एंड इट इज प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट आउटपुट y2 ऑफ t. नाउ इफ आई ऐड दीज टू इनपुट्स जो मैंने इंडिपेंडेंटली एक एक दफ़ा इस सिस्टम को दी हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, सो माई इनपुट नाउ बिकम्स x1 प्लस x2, तो क्या मेरी आउटपुट भी या रिस्पांस जो था, क्या वो रिस्पांस भी इसी तरह से ऐड हो जाता है या ऐड नहीं होता? अगर तो वो भी इसी तरह से ऐड हो गया, यानी अगर x1 प्लस x2 के लिए मेरे पास रिस्पांस y1 प्लस y2 आ गया, तो देन आई विल से दैट माई सिस्टम हैज दिस एडिटिविटी प्रॉपर्टी. सो जब हम बात करते हैं कि कोई सिस्टम लीनियर है या लीनियर नहीं है, तो लीनियर सिस्टम वो होता है जिसको दो प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए. एक वो एडिटिव होना चाहिए, यानी ये वाली जो जब आप इनपुट्स को ऐड कर दें तो आउटपुट्स भी उसी तरह से ऐड हो जानी चाहिए. सो एक तो ये लीनियर सिस्टम में प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरा उसमें होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए या स्केलिंग की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जब आप इनपुट को किसी रियल या कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट भी उसी रियल या कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए. सो ये दो प्रॉपर्टीज एडिटिविटी और होमोजेनिटी ये जिस सिस्टम में पाई जाती हैं वो लीनियर होता है, और अगर किसी में एक भी नहीं होगी तो वो सिस्टम फिर लीनियर नहीं होगा. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दीज LTI सिस्टम्स जिनको हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहते हैं. सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम तभी लीनियर होगा जब उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये वो होमोजीनियस भी होगा और एडिटिव भी होगा. अगर इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी वो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा तो फिर वो लीनियर नहीं होगा. और अगर सिस्टम लीनियर होने के साथ ही साथ टाइम इनवेरिएंट भी हो, टाइम इनवेरिएंट की प्रॉपर्टी अभी हमने देखी है, तो देन सच अ सिस्टम इज कॉल्ड LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. So linear time invariant systems are very important. In fact, many practical systems are linear and time invariant. In some cases, we may have some systems which are non-linear, but they can be accurately approximated as linear for small inputs या for small signal excitation. So हम इसके बाद जितने भी systems से deal करेंगे वो और जिन पे हम जो हमारा एम्फोसिस होगा, जो सिस्टम्स हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा एम्फोसिस ऐसे सिस्टम्स को स्टडी करना होगा जो लीनियर होंगे और टाइम इनवेरिएंट होंगे, यानी LTI होंगे. इन शॉर्ट जिस सिस्टम में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी वो लीनियर भी होता है और टाइम इनवेरिएंट भी होता है, तो ऐसे सिस्टम को LTI सिस्टम कहा जाता है. सो LTI सिस्टम्स के बारे में ही अब हम आगे बात करेंगे कि LTI सिस्टम्स क्या होते हैं और उनके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. लेकिन इसके बाद अब हम अपनी जो तमाम सिस्टम्स की स्टडी है उसको कन्फाइन कर देंगे for those systems which are linear and time invariant, and in short they are called LTI systems. Okay, so let's take a few examples of linearity or non-linearity. अगरचे ज़्यादा डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अगर आप एक रजिस्टर की IV डायग्राम देखें, उसकी वोल्टेज और करंट की डायग्राम देखें, तो दिस इज़ अ लीनियर कर्व. जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो ये अकॉर्डिंगली जो करंट थ्रू दैट रजिस्टर है वो भी उसी तरह से बढ़ता जा रहा है. सो दिस इज समथिंग, रजिस्टर इज कॉल्ड अ लीनियर डिवाइस. बट इफ़ वी टॉक अबाउट डायोड, अब यहाँ पे हमें वोल्टेज को हम जब जैसे जैसे हमने बढ़ाना शुरू किया तो करंट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट उस सेम अमाउंट से नहीं बढ़ रहा. सो बेसिकली दिस VI डायग्राम ऑफ अ डायोड शोज दैट डायोड इज non-linear device. But for small signal excitations we can assume this diode
एज लीनियर, और बहुत सारे जो लीनियर सिस्टम्स की टेक्निक हम पढ़ेंगे वो इस पे भी अप्लाई की जा सकती हैं। ओके, सो नाउ let's take another example. Let's suppose we have two signal x1t and x2t, ठीक है, और मेरे पास जो आउटपुट है वो इन दोनों का मल्टीपल है, इन दोनों जो इनपुट्स हैं x12 और x2t उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों पोर्ट्स पे, सो आई हैव सिस्टम जिसको आप एनालॉग मल्टीप्लायर कह सकते हैं। सो इस पे एक पोर्ट पे आप x1t सिग्नल इनपुट देते हैं, दूसरी पोर्ट पे x2 देते हैं। सो आउटपुट पे ये आपको इन दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके दे देता है। सो अब अगर मैं दोनों पोर्ट्स पे सेम सिग्नल दे दूं, इधर भी xt दे दूं और इधर भी xt दे दूं, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगी y ऑफ t, दैट विल बी x स्क्वायर ऑफ t, ठीक है। सो x स्क्वायर ऑफ t जो है, ये हम इन्वर्टिबिलिटी की टर्म में तो देख चुके हैं कि ये सिस्टम इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि ये दो डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। +3 के लिए भी वही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो -3 के लिए प्रोड्यूस करेगा। मोर ओवर ये सिस्टम होपफुली लीनियर भी नहीं होगा, ठीक है। सो ये क्यों लीनियर नहीं है, सो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल सिस्टम्स की हम एग्जांपल लेंगे और स्टेप्स के थ्रू उनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो है वो आपके पास सिस्टम लीनियर है या सिस्टम लीनियर नहीं है। सो ये एग्जांपल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, सो दैट वाज फॉर टुडेज लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हमने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ की बात की, हमने स्टेबिलिटी, कॉजैलिटी, मेमोरी, उसके अलावा इन्वर्टिबिलिटी, फिर लीनियर सिस्टम्स, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम तक के लिए खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे एक और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।